आनंद दुबे, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के फैसले पर स्थगिति नहीं देंगे, कोई भी स्टे नहीं लगाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, पूछा था शिंदे कैंप के लोगों से कि वकील से कि आप क्या कोई व्हिप जारी करेंगे, तो उन्होंने कहा है कि हम कोई व्हिप जारी नहीं करेंगे। आपके मन में जो था कि स्थगिति मिलेगी, वो नहीं मिल पाई आपको? देखिए साहिल भाई, ऐसा है कि शुक्रवार की शाम को यह घटना घटी। शनिवार रविवार बंद होने की वजह से हम सोमवार सुप्रीम कोर्ट गए, हम मेंशनिंग किए और आज उस पर सुनवाई हुई है। तो कम से कम एक शुरुआत तो हुई। जिस न्याय के सबसे बड़े मंदिर में हम गए हैं, वहां पर एक शुरुआत हुई है और न्याय देवता ने कहा है कि 2 हफ्ते के बाद हम इस पर जरूर सुनवाई करेंगे, लेकिन तब तक आपका नाम और आपका चुनाव चिन्ह मशाल, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और आपके जो विधायक हैं उनको भी अयोग्य के लिए नोटिस नहीं दिया जाएगा। तो कम से कम एक राहत की शुरुआत हमारे लिए हो गई है। हम बार बार कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण विश्वास है। हम चुनाव आयोग के खिलाफ गुहार लगाने गए हैं। अब हमें आज भले स्टे न मिला हो, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले जब 15 दिन के बाद सुनवाई शुरू होगी, तो पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग जब एक बहस के दौरान ये सब चीजें समझेगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। लेकिन आपको सबसे बड़ा डर इस बात का था कि महाराष्ट्र विधानसभा का जो बजट सेशन शुरू होने वाला है, उसमें आदित्य ठाकरे से लेकर जो आपके 15 विधायक हैं, उन सभी को शिवसेना का व्हिप फॉलो करना पड़ता। अगर वो व्हिप निकालते तो आपको उस व्हिप के तहत वोटिंग करना पड़ता, उस तहत काम करना पड़ता। कम से कम ये रिस्पाइट आपको मिला है कि शिंदे गुट ने कह दिया है कि हम कोई व्हिप जारी नहीं करेंगे। नहीं, शिंदे गुट ने क्या कहा है? जब सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये तब तक आपके विधायक अयोग्य नहीं हो सकते, आपका मशाल चुनाव चिन्ह और आपका नाम एकदम बढ़िया से है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी है। और जो हमें डर था कि हम अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, तब तो फिर जिस प्रकार एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है उसी प्रकार होता। लेकिन ये तो अच्छा हुआ है कि हमारे देश में, लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट जैसी एक बहुत बड़ी न्याय की देवता बैठे हैं, जो कि न्याय करने का काम करते हैं। हमें उन पर पूर्ण विश्वास है और हमें उम्मीद है कि जब भी अगली बहस होगी और आगे चलते मामला हमारे पक्ष में ही निर्णय देगा। ठीक है आनंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। राजदीप सरदेसाई, द इंडिया टुडे ग्रुप्स कंसल्टिंग एडिटर, is also joining us at this point of time. Rajdeep, you heard what happened in the Supreme Court. On one hand, the Chief Justice said that yes, they are going to hear the special leave petition filed by the Thackeray camp, but on the other hand, they have refused to put a stay on the Election Commission order. Kapil Sibal was trying to tell the court that the Shinde camp, the Shiv Sena, is taking over the offices, the parliamentary party office, the legislative party office. The bank accounts are being taken over by the Shinde camp. That should be stopped. The Supreme Court has said that no, they cannot put a state until and unless they hear from the Shinde group as well as from the Election Commission. But on the other hand, the Shinde camp has promised that they will not be issuing any whip. You think that right now Uddhav Thackeray was only looking at a small respite from Supreme Court, that at least the Shinde camp shouldn't issue any whip because they are going to face this budget session in few days' time? Absolutely. I think, Sahil, what is very clear is that I don't think that the Uddhav camp had much of a chance of getting an immediate order from the Supreme Court. Look, the 1971 judgment in the Sadiq Ali case is very clear, the symbols order. The EC has the prerogative to decide on symbols. And since then, the Supreme Court has never overturned what the EC has said on symbols. The EC has even frozen symbols in the past. And the Supreme Court has said this is within the prerogative of the EC. And that is the rule that they seem to be applying in this stage, at least prima facie, till, of course, the matter of defections is heard. So it's not as if it's over for Uddhav Thackeray, but for him to have thought that overnight he would get an immediate relief from the Supreme Court was never going to happen. And all I think that they wanted was some kind of a temporary respite. But by saying that they are not going to touch the Supreme Court, the EC order at this stage, effectively the Supreme Court has given the Shinde camp a lot of elbow room while saying you cannot decide on defection and disqualification yet. That we are going to decide. And that may take a long time yet. But clearly, Sahil, the momentum now continues to be with the Shinde camp, because they have the symbol, right, they have the party name, and as you've said, they've taken parliamentary party office and Vidhan Sabha office. And therefore, for now at least, the impression going on is that the Shinde camp is fully in control of the Shiv Sena machinery.
Now, the only question is, how will this be tested by the voter? And that won't happen till the BMC elections. But for now, if Uddhav camp was hoping that there will be any immediate respite for them, Right. they have not got that. Only thing is that their MLAs cannot be disqualified till the issue is heard by the Supreme Court on the larger defection question. Well, this is going to be really interesting in Maharashtra. On one hand, some kind of a relief for Uddhav Thackeray camp that they can use Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray name and a torch as a symbol till the time the election commission is, till the time the Supreme Court is hearing the petition, the special leave petition filed by Uddhav Thackeray camp against the election commission decision of allotting the bow and arrow symbol and the name Shiv Sena to the Shinde camp. But on the other hand, the Shinde camp has promised Supreme Court that they are not going to issue any kind of a whip to Uddhav Thackeray camp. So this fight is not over yet. 2 weeks from now, after Shinde camp and Election Commission files their reply, again both the camps will be facing Supreme Court arguments from 2 weeks from now, and also the current assembly session which will begin in 1 week's time. We are going to slip into a short break at this point of time, and India Today, the news and updates will go on the other side of the break as well.